Hello, my friends. Today I'm here to teach the difference between in and into. Many of my students come with this problem that ma'am in का use करना है, into का use करना है, and I'm very sure after watching this video, things will be very easy for you. In is used to point to an object that is in rest. किसी भी चीज में अगर हलचल नहीं हो, already वो उसी position में है, then we will use in. For example, in morning, in Delhi, in trouble, in tension. In sentences हम बोल सकते हैं that he woke up in morning or he stays in Delhi, or we also can say he is in trouble or he is in tension. मतलब already वो उस सब स्थिति में है या उस सब पोजीशन में है. Into is used to point to an object that is in motion. Into उस समय यूज होता है जिस चीज में मोशन हो, अगर वो चेंज हो, ट्रांसफॉर्म हो या मोशन हो, दोनों केसेस में. फॉर एग्जाम्पल, चॉप द पोटैटोज इनटू पीसेस. अब पोटैटोज है, अब हम इनको पीसेस में अगर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, पोटैटोज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पीसेस, दैट विल यूज इनटू. और वी कैन से द वाटर टर्न इनटू आइस. पानी जम गया, जम के उस चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू आइस, देन विल से वाटर चेंज इनटू आइस. Thirdly, I'll say I converted my house into office. मैंने अपने घर को ऑफिस बना लिया, घर को ऑफिस में कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया. Then we can say that this changing is into. Or we can also say translate हिंदी into English. हिंदी को इंग्लिश में बदलो, तो ये भी क्या हो गया, एक ट्रांसफॉर्मेशन. और अगर हम वैसे भी कह सकते हैं कि the tea is in the cup which is already there and pour the tea into the cup. एक कप से दूसरे कप में टी डालें. थैंक यू. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. बाय बाय.